So a fresh good morning to all of you and welcome to Gyan with online classes. And today we shall discuss more about our topic number 9, chapter number 9, La Tomatillo or Plastic English, chapter number 9. Okay, it is a small story about the festival that is being celebrated in Spain every year. La Tomatina. Okay. So let's go through our book. So kindly open your book, page number 82. Okay, page number 82. La Tomatina. Okay. So before going, before going to this chapter, let's find out some new words. Okay, so that this new words will help you to understand the meaning of this chapter. Okay. Okay, here are some new words. Chaotic, that means disorderly. Unleashed, let free, खुद को क्या फ्री छोड़ देना. Squishy, pulpy. Squishy मतलब pulpy. Pulpy का मतलब होता है जो टमाटोज होते हैं वो क्या है, थोड़ा pulpy टाइप के होते हैं, ठीक है ना. Squash, it means place something so that it is no longer firm. Squash मतलब क्या, पिचक देना, ठीक है ना. Recommended, suggested, को सजेस्ट करना. Hostown, to clean with water from a large pipe. Hostown का मतलब होता है कि लोग का एक पाइप है जिसके द्वारा क्या है वाटर से क्या है कुछ भी चीज को क्या है क्लीन किया जाता है, ठीक है ना. मैसिव, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा. स्लगफेस्ट, एक कंटेस्ट ऑफ बॉक्सिंग एंड बेसबॉल. तो स्लगफेस्ट का मतलब क्या होता है, एक कंटेस्ट है, ठीक है, बॉक्सिंग और बेसबॉल का एक कंपटीशन है. पहला एक राइस डिश, एक वन टाइप ऑफ क्या है डिश है. स्केची, इट मींस इनकम्प्लीट, जो पूरा ना हो सके. आउटलॉ, मेड इलीगल, जो कानून के दायरे में ना हो, ठीक है ना, इलीगल है वो, ठीक है ना, वो खिलाफ, कानून के खिलाफ जो है वो लीगल कहलाता है. ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 9, ला टोमाटिना. सो इट इज ए फेस्टिवल, स्मॉल फेस्टिवल व्हिच इज being observed, celebrated every year in Spain in the month of August, in the last week. Okay, so here numerous thousands of people, they gather at one place and they perform or celebrate this kind of festival. So let's go through our book in details to know how these festivals are observed. This festival is being observed in Spain. Okay. So La Tomatina is an annual festival held in Bernal, a small town in Spain. This annual festival begins on the last Wednesday in August. The highlight of the festival is the tomato fight that begins at 11 a.m. Every year, thousands of people from all over the world reach this little town to take part in this chaotic event. Okay. So, La Tomatina is a small festival which is being observed in the Valencia city of Bernal in Spain. Okay, तो वेलेंसिया सिटी में एक बर्नल नाम का एक जगह है स्पेन में, जहाँ पर कि जो ला टोमाटिना फेस्टिवल है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना. And it is an annual festival. It means each and every year this festival is being observed by thousands of people, and thousands of people, they come all over world in the place, gather in the place
and they celebrate this annual festival. Okay, this annual festival begins on the last Wednesday in August. The highlight of festival is the tomato fight that begins at 11 a.m. Okay, so this festival begins on the last Wednesday of August. Each and every year on the last week of August, this festival is being observed every year. Okay, and the highlight, the main part of this festival, that why people are celebrating this festival. Okay, the most beautiful highlight of this festival is that tomato fight. Okay, this large tomato festival, it is a festival where people used to throw squashy tomato on each other. On each other, they throw the squashy tomatoes, and they celebrate this festival each and every year. Okay, the main highlight of this large tomato festival is the tomato fight. Okay, which starts at 11 a.m. and the fight continues till 1 hour. Okay, so this festival continues till 1 hour. Okay, for 1 hour they play this tomato fight. Okay, where they throw squashy tomatoes on each other. Okay, and thousands of people, they all over the world, they come to this place, Banal, in order to play or celebrate this festival. Okay, so participants get 1 hour to unleash their inner child and engage in the biggest food fight in the world. The city council dumps truckloads of tomatoes in the streets, and once the festival begins, no one is safe from the attack of squishy tomatoes. Okay, so here the participants, those who are taking part in this tomato fight, they have 1 hour to unleash. Okay, they have 1 hour to let free themselves in this tomato fight. Okay, they have 1 hour to unleash themselves in this tomato fight, to free themselves, to make their to bring their inner childish. Okay, so they have got only 1 hour to let them free and bring their childish nature. Okay, for 1 hour and play this tomato fight, play this festival. Okay, and the city councils. Okay, city councils, they bring truckloads of tomatoes in the street. They put down, okay, in the streets, and they dump truckloads of tomatoes in the street, and in this way the fighting game that begins in the burner. Okay, and once the festival starts, the participants, those who are taking part, they can't stay free from this game. Okay, they can't stay away from this game of tomato. Okay, game of tomato fighting. Okay, so the city councils, to the present there, they bring truckloads, ट्रक भर के जो सिटी काउंसिल्स होते हैं वो ट्रक में भर के क्या है टमाटोस को क्या है लाते हैं बनल जो छोटे से गली में, ठीक है ना, बनल के छोटे से गली में ट्रक भर के टमाटर लाते हैं, और वही टमाटर से क्या है वो ये गेम क्या है खेलते हैं, टमाटो फाइट, ठीक है ना। अगर कोई एक बार वो पार्टिसिपेंट को जो पार्टिसिपेट कर रहा है अगर एक बार आ गया तो वहाँ से वो बचकर जा नहीं पाएगा, क्योंकि जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, पर्सन जो पीपुल रहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या टमाटर फेंकते हैं, फेंक कर क्या खेला करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी क्या है वहाँ से क्या है बच कर नहीं जा सकता, सबको मारते हैं, ठीक है ना। हम लोग जैसे कि उस स्पॉन्ज बॉल से मारते हैं ना, फेंक कर मारते हैं, ठीक है ना। होली के टाइम में जैसे हम लोग वो जरी में क्या है कलर भरते हैं और फेंक के मारते हैं, वैसे क्या वहाँ पे भी टमाटर फाइट ऐसे होता है, ठीक है ना। तो क्या है टमाटर को क्या एक दूसरे के ऊपर क्या है फेंक कर क्या है मारते हैं। तो यहाँ पे जो सिटी काउंसिल होते हैं वो भी क्या मदद करते हैं, ट्रक में भर के टमाटर लाते हैं और उसी में से वो खेलते हैं। ओके, so there are some rules that they have to follow while playing this game. So each and every game has some certain rules. Okay, each and every game that we do play, we follow certain rules while before playing the games. Okay, so what are the rules of this fight? Let's discuss here.
So tomatoes need to be squashed before throwing so that people don't get hurt. No other vegetables except tomato is allowed. Participants have to make way for trucks and other vehicles. After the second horn is blown, which indicates the end of the festival, no more tomatoes should be thrown. So these are some 4 rules that have to be followed during the play. Okay, the participant who is going to play for the first time, he or should have to remember these 4 rules. That first one is the tomatoes that who is going to throw should be squashed. Okay, the liquid part, the juicy part should be peeped out. Okay, should be the juicy part of the tomato should be out. Okay, the tomato should be squashed so that if someone throws the tomato, the other person wouldn't get hurt. तो पहला रूल ये है कि जो टमाटर वो फेंकते हैं तो टमाटर में क्या जूस भी रहता है। तो पहला रूल ये कहता है कि वो जो टमाटर में जितना भी जूस रहता है उसको स्क्वैश करके पिचक करके निकाल दो, ताकि क्या है अगर हम एक दूसरे के ऊपर उसको मारेंगे ना तो हमको क्या ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। अब देखो टमाटर हो या कुछ भी छोटा चीज़ मारने से भी चोट लगता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है अगर वो कुछ टमाटो अगर होगा, टमाटर में जूस अगर होगा तो वो क्या है किसी के ऊपर अगर लगेगा तो क्या है ज़्यादा दर्द क्या है उसको लगेगा, ज़्यादा दर्द क्या है महसूस होगा। तो पहला रूल ये है कि क्या है जो जूस रहता है उसको पिचक करके है निकाल दो, उसके बाद क्या है टमाटर फेंक कर मारो ताकि क्या दूसरे को हर्ट ना हो सके। दिस इज द फर्स्ट रूल। देन सेकंड रूल इज नो अदर वेजिटेबल्स एक्सेप्ट टमाटो इज अलाउड। ओके, सो none other vegetables other than your tomato is allowed in this festival. Only tomato is allowed to play in this game, because there are some vegetables that are hard. So if someone throws some other vegetables except some other vegetables other than these tomatoes, then it will make hurt. The other person will get hurt from the vegetables, because they are sometimes most of the vegetables are hard as compared to this tomato. It is a juicy one, it is a soft one, so it doesn't make much harm to other one. Okay, then the third one is participants have to make a way for trucks and other vehicles. So as it is placed in a local street, okay, it is placed in a local street, so the participants should remember one point, that they should give space for the trucks and vehicles. So whatever the trucks or vehicles they are passing by, they should give space to them. Okay, and the fourth point is after the second horn is blown, which indicates the end of the festival, no more tomatoes should be thrown. Okay, so the last point is that they start the game by blowing the first horn. Okay, and the game ends with the second horn. And the game, as a while before I have said in that the game is played only for an hour. Okay, तो पहला हॉर्न बजाते ही ये गेम शुरू होता है, और जैसे ही सेकंड हॉर्न बजता है ये गेम क्या है फिनिश हो जाता है। तो सेकंड हॉर्न के बाद किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता कि वो टमाटर फेंके, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट में क्या है केस बन सकते हैं। ओके, सो दिस इज सम 4 रूल्स दैट वन शुड फॉलो व्हेन ही और शी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट गेम। ओके, then come to our next part. Okay, participants are recommended to wear goggles to protect their eyes from the acids in the tomatoes. After the fight, firefighters goes down the town, while the locals generously offer the participants their houses for cleaning themselves. Around 150,000 tomatoes are used during La Tomatina. The tomatoes are used usually of low quality and inferior in taste. Okay, so this is the plus point, that first is the participants are recommended or they are advised to wear goggles. Okay, though they are advised to wear goggles before starting the game,
the participants are recommended, they are suggested that you should wear goggles, okay, so that the tomatoes wouldn't get stuck in your eyes, okay, because the tomato contains some citric acid, ठीक है ना। तो टमाटो जो होते हैं उनमें क्या साइट्रिक एसिड रहते हैं। तो देखो जो टमाटो का जो जूसी पार्ट है वो हमारे आँख में जाने पर जलता क्यों है। सोचने वाली बात है कि जो जूस है वो जाने पर हमारे आँख में जलता क्यों है, क्योंकि टमाटोज में क्या साइट्रिक एसिड रहते हैं, तो क्या है जब आँख में जाता है तो क्या जलन शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या है जो फेस्टिवल है ला टमाटिना, तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट को सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग गोगल्स पहन कर क्या है वो खेलेंगे, ताकि क्या है जो टमाटर है वो आपकी आंखों में ना पड़े और क्या है आपकी आँख न जले, ओके। एंड आफ्टर द फाइट firefighters hose down the town while the local generously offered the participants their houses for cleaning themselves, okay. So after the fight completes, okay, the firefighters, the fire brigade team, they come with a long pipe which contains water, okay, long pipe with water. They clean the street and also the people, and there are some people, okay, state local peoples, they also give the participants their house to clean themselves, okay. So there are some peoples like the street, the people who are present in the street, तो स्ट्रीट में जो लोकल्स रहते हैं वो भी क्या कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनको ना अपना घर दे देते हैं, मतलब अपने आप को क्या साफ सुथरा नहाने के लिए क्या है उनकी जो बाथरूम क्या यूज़ करने के लिए दे देते हैं, उतना वो जेनरसिटी क्या है दिखाते हैं। हमारे आसपास तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। कोई घुस जाए, कोई कुत्ता बिल्ली घुस जाए तो उसको मार कर भगाते हैं, वहाँ पर तो कम से कम उसको क्या है नहाने के लिए जगह दिया जाता है, ठीक है ना। सो अराउंड 1,50,000 tomatoes are used during La Tomatina. So around 1,50,000 tomatoes are used in this festival. Okay, 1,50,000 tomatoes are used in this festival, which can feed a one state also. Okay, one district, which can feed a one district also. 1,50,000 tomatoes. Okay, so it is not the case, okay. 1,50,000 tomatoes are, yeah, these are this 1,50,000 tomatoes are dumped into the street, okay. But these are not that kind of tomato that we consume, okay. These are not that kind of tomatoes. These are all pure stale tomatoes that are not fit for eating, okay. That are not fit for eating, cooking. Their quality is very low. So this kind of tomatoes are dumped into the street. तो जो ये टमाटो है अराउंड क्या है 1,50,000 क्या है 1,50,000 टमाटोज क्या है ये फेस्टिवल में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इतने सारे टमाटर बर्बाद क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इतने सारे टमाटर क्या है बर्बाद क्यों कर रहे हैं, तो बर्बाद वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे देश में क्या है बहुत सारे टमाटर क्या है गल सड़ के क्या है बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग स्पेनिश लोग क्या करते हैं फेस्टिवल में वो 1,50,000 टमाटोज ऐसे होते हैं जो कि क्या है खाने के लिए अनफिट हो, ठीक है ना, जिसका क्वालिटी बहुत ही घटिया हो, मतलब घटिया तो नहीं बोलेंगे, अच्छा ना हो, ठीक है ना। जिसका क्वालिटी अच्छा ना हो, जो खाने के लिए फिट ना हो, वैसे टमाटर को क्या है वहाँ पे लिया जाता है, ना कि क्या है गुड क्वालिटी टमाटोज को, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसे करेंगे गुड क्वालिटी टमाटोज को अगर खेलने के लिए अगर दे देंगे तो हम उनके पास तो खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। सो दैट इज वाई दे डंप दिस टमाटोज व्हिच आर नॉट फिट टू ईट, देयर क्वालिटी आर वेरी लो, ओके। La Tomatino is just the highlight of the week of festivities. The week leading up to the massive slugfest is filled with huge parades, fireworks, and famous paella cooking contest. Okay, so it is a week-long festival. Okay, it continues over the whole week. Sharply at 11 a.m. and it completes at 12 p.m. So just for an hour they play this game. So this game begins. This takes place the whole week. Okay, the whole week this game goes on at every 11 a.m. to 12 p.m.
And after the La Tomatino festival, there is also one competition that is Slugfest, which is a contest of boxing and baseball. So after this La Tomatino festival, Slugfest contest is also Slugfest contest took place. Okay, it's a contest of boxing and baseball. Okay. Okay. And also festival like rice days, pehla festival, it is also a festival which takes place after a while, after sometimes this La Tomatino festival. तो La Tomatino festival के बाद क्या है, आपको ये लग फेस्ट भी क्या है ऑब्जर्व किया जाता है. साथ में क्या पहला जो डिश का फेस्टिवल है वो भी क्या है, पहला कुकिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है ना, कुकिंग कॉन्टेस्ट है. ये जो पहला है वो क्या कुकिंग कॉन्टेस्ट है, वो क्या है ऑब्जर्व किया जाता है. तो simultaneously after some times after La Tomatino tomato fight, after some tomato fight, they used to make Slugfest. Then after a contest, pehla cooking contest, each and every kind of contest they do there. Okay. So the origins of tomato throwing festivals are a bit sketchy. No one knows for sure how it began. So it is a kind of incomplete idea. Okay. So no one present there, they don't know that how this festival came to know. Okay. How this how this festival originated. Okay. So no one is there who can answer that from when did this tomato festival originated. Okay, so no one is there who can answer this. Okay, so it's a bit incomplete idea. Okay, some of them think that in a vegetable market, one person threw some tomatoes to someone else, and from that day onwards, and each and every year this festival goes on. Okay. So, however, it is largely believed that in August 1945, a street fight broke out in Bernal. One of the participants started throwing vegetables from a nearly stall. This led to everyone doing the same, and furious vegetables battle followed. Next year, the same group of young people picked a quarrel on purpose and brought their own tomatoes this time. So it is believed that, okay, there is not a sketchy idea, okay, incomplete idea about this festival, but however it is believed that in August 1945, what happens, a street fight broke. Okay, there was a fight in the street between two parties. So one party threw vegetables on one another. So from that day onwards, each and every year the festival goes on. So from the next year, okay, from the next year, the same two parties, they bring tomatoes of their own from their homes. Okay, the same parties, those who threw vegetables on one another, then from the next year they bring tomatoes, they brought tomatoes from their homes and threw on each other. So in this way the festival goes on increasing every year. It goes on, and from that day onwards, in each and every year in the month of August, in the last week of August, this festival, tomato fight festival, is being observed. Okay. So although lawmakers tried to put an end to the chaos every year around the same time, more and more people gathered to repeat the tomato war. Despite the growing popularity, the fight was outlawed in 1950s. However, due to rising pressure from the locals, the town council approved the fight again in 1959 with the stipulation that tomato throwing could only begin with the sound of one horn, and when the horn sounded again. Okay. So after some years, they believe that after some years, the lawmakers, the police,
दे बैन दिस फेस्टिवल। ओके, कुछ सालों तक क्या है ये जो फेस्टिवल है उसको क्या बैन किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि इसको क्या है इलीगल माना जा रहा था। दिस थॉट दैट बिलीव दैट इट वाज illegal throwing vegetables on upon one another, so it was banned for 3 to 5 years. And after banning this festival, the people of this locality, the people of that locality, that state, they protested against the lawmakers that this festival should be re-originated, it should be continued. Okay, and they protested for some time, and after seeing this protest, the lawmakers they decided to re-originate this festival. Okay, तो क्या हुआ कि कुछ सालों तक ये जो फेस्टिवल है उसको बंद कर दिया गया था, इसलिए कि इसको क्या है कि इलीगल माना जा रहा था, क्योंकि वेजिटेबल्स को एक दूसरे पर फेंकना क्या है इलीगल माना जा रहा था। ये तो एक तरह का क्या है फाइट था जो कि इलीगल माना जा रहा था, ठीक है। तो कुछ सालों तक तो उसको बैन कर दिया गया था, लेकिन क्या वहाँ जो स्टेट लोकल्स थे वो क्या है इसके अगेंस्ट में क्या प्रोटेस्ट किए, ठीक है ना, कि आप लोग जो उसको बैन किए हो उसको क्या है तुरंत हटाओ, हम लोग क्या ये फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं। तो कई दिन तक क्या है प्रोटेस्ट चलता रहा, और लास्ट में क्या है जो लॉ मेकर्स है गवर्नमेंट है वो क्या ये बैन को हटा दिया, और क्या फिर से क्या जो फेस्टिवल है वो फिर से चालू हो गया। सो अप्रूव द राइट in 1959. Okay, so in 1959 the government, the Spanish government removed the ban, okay, in 1959, and once again this game continued with some stipulation, with some limitation. Okay, so earlier before there were no rules followed while playing these games, so in 1959 the government removed the ban, and with some stipulation, with some limitation of these games that we have read earlier a while before, that there are 4 rules that have to be followed by the people, by the participant who is going to play. So it is some kind of rules that was proposed in 1959, okay, implemented in 1959 with some stipulation, okay, and with this limitations the people agreed, the protester agreed that yes we should follow such steps while playing this festival. Okay, and in this way the festival began to re-originate. Okay, and the lawmaker, okay, and the lawmaker he told that the game should be played by the first horn, and it should be completed with the second horn. Okay, the second horn is blown, then no one will be there, no one will throw tomatoes or start or continue this game. Okay, these are some rules that the protesters followed, and the lawmakers, the government removed the ban, started this game once again. Okay, so from then onwards La Tomatina has emerged as one of the most popular festivals of Spain. In 2002 it was named the festivity of international tourist interest by Spain's tourism ministry because of its spectacular success. So it was very successful one, it was a very successful spectacular festival that lots of thousands of tourists also visited Spain, and they participate in this tomato festival. Okay, so this is all about your chapter number 9, La Tomatina. Okay, so I want to recap some in Hindi. Okay, तो जो ला टमाटिना फेस्टिवल है वो स्पेन के बनल स्ट्रीट के क्या है स्ट्रीट में खेला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ क्या रूल्स बताया जाता है कि आप लोग ये सब करके क्या है इसको खेल सकते हो, ठीक है ना। तो पहले जो वो अब तो जो ला टमाटिना फेस्टिवल है वो किसके लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है टमाटो फाइट के लिए। यहाँ पे जो पीपुल हैं
ठीक है ना। जो पार्टिसिपेंट है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है टमाटर फेंक के मारते हैं, ये तो क्या है प्ले है। तो सबसे पहले क्या है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या है गॉगल्स पहनकर क्या है खेलना पड़ता है, ताकि जो आँख में क्या है टमाटर ना लग पाए, या टमाटर का जो जूस है उसमें क्या साइट्रिक एसिड रहते हैं वो आँख में जाने पर क्या जलन होता है, तो आँख खराब ना हो, आँख को डैमेज ना हो, इसलिए क्या है उनको गॉगल्स पहन कर क्या है पढ़ने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। अब क्या है ये जो फेस्टिवल है अगस्त के लास्ट वीक में हर साल खेला जाता है 11 से 12 बजे के अंदर, और ये पूरा एक हफ्ता तक क्या है कंटिन्यू चलता है, ठीक है ना। और ये फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद क्या है जो फायर फाइटर्स होते हैं, जब फायर ब्रिगेड होते हैं वो क्या है पानी भर कर क्या है टैंक में पानी भर कर लाते हैं, वो स्ट्रीट को क्या है साफ सफाई करते हैं। अब देखो जो स्ट्रीट में वो खेलते हैं वहाँ पे क्या है वहाँ के लोकल्स भी रहते हैं, ठीक है ना। तो वो लोकल्स लोग इतना जेनियस होते हैं, इतना काइंड हार्टेड होते हैं कि वो लोग क्या है अपना जो बाथरूम है उसको क्या है वो दे देते हैं कि आप लोग क्या है फ्रेश हो जाओ। तो वो क्या है अपना जो टमाटो में जो भीगे रहते हैं वो क्या वहाँ पे नहा लेते हैं, अपने आप को क्या है साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। उतना वो जेनियस होते हैं। तो देखो जो फेस्टिवल है ये कब से स्टार्ट हुआ किसी को कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो रफली कोई कहता है कि 1954 समथिंग में क्या है ये जो फेस्टिवल है वो क्या स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि क्या दो पार्टीज जो ग्रुप एक स्टॉल में क्या है वेजिटेबल स्टॉल या वेजिटेबल मार्केट में क्या है दो पार्टी एक दूसरे के ऊपर क्या है वेजिटेबल्स क्या है फिर फेंकर मारा करते थे। तो उस दिन से वो शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके नेक्स्ट ईयर से वो क्या है टमाटर फेंकना स्टार्ट करते हैं, पहले तो वेजिटेबल्स फेंकते थे, अब नेक्स्ट ईयर से क्या टमाटर फेंकना वो स्टार्ट कर दिए एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से क्या वो धीरे धीरे क्या वो गेम क्या है स्टार्ट हो गया। तो कुछ सालों के लिए क्या है ये जो गेम था वो क्या है बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है ना। तो जो लॉ मेकर्स ने गवर्नमेंट है वो क्या है बंद कर दिए थे इसको कि ये इलीगल है इसलिए। लेकिन क्या है वहाँ के जो स्टेट्स हैं लोकल्स हैं वो क्या है प्रोटेस्ट किए, ठीक है ना, वो क्या है प्रोटेस्ट किए। तो प्रोटेस्ट करने के बाद क्या है फिर से क्या है जो गवर्नमेंट है वो जो बैन लगाए रहते हैं उसको क्या रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और वो गेम को स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ उसको स्टार्ट करवाते हैं। तो पहले जो स्टार्ट हुआ था उनमें क्या कुछ लिमिटेशंस नहीं था, वो क्या एक दूसरे के ऊपर क्या फेंक कर मारते थे, ठीक है ना। तो जब गवर्नमेंट ने बैन हटाया तो कुछ लिमिटेशन इम्पोज किए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या है गॉगल्स पहन कर क्या है खेलेंगे, ठीक है ना। और क्या है वो जो गेम है वो एक हॉर्न में क्या स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जब एक हॉर्न ब्लो करेंगे एक बार जब साउंड क्या ब्लो करेंगे हॉर्न बजाएंगे तो स्टार्ट होगा और सेकंड हॉर्न में क्या खत्म होगा, उसके बाद से कोई और खेलेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो अराउंड क्या 1,50,000 टमाटोज क्या है वहाँ पे डंप किया जाता है, स्ट्रीट में क्या है डंप किया जाता है, ठीक है ना। तो जो वो टमाटर हैं 1,50,000 उनके जो क्वालिटीज़ हैं वो अच्छे नहीं होते, साथ में क्या वो खाने के लिए लायक नहीं होते। तो ऐसे टमाटोज को क्या है वहाँ पे डंप किया जाता है, ना कि क्या है साफ़ सुथरे अच्छे टमाटोज को वहाँ पे लाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि क्या अच्छी क्वालिटी टमाटोज को ला रहे, वो ऐसा टमाटर को लाते हैं जो कि क्या है वो क्वालिटी अच्छा नहीं होता, साथ में क्या है वो बहुत ही खाने लायक भी नहीं होती, ठीक है ना। तो क्या है ये सब कुछ ना कुछ क्या है रूल्स थे जो कि क्या है पार्टिसिपेंट फॉलो करता है, ठीक है ना। तो उस दिन से क्या है ये फेस्टिवल क्या है चलते आ रहा है और हर साल क्या है इसको खेला जाता है। और दूसरे जो टूरिस्ट हैं दूसरे देश से भी क्या है हज़ारों क्या है टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे ये गेम को खाली खेलने के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ला टोमाटीना चैप्टर नंबर 9। इट इज जस्ट काइंड ऑफ फेस्टिवल ओके which is played in Spain each and every year. So I hope you have understood it properly. Okay, so I want to tell you that please go through the book, try to improve the reading, okay, try to improve your reading so that you can get to know more about this chapter, okay. And you should learn the new words, the meaning of the words, so that you can get you can find it more you can find easy in understanding this chapter, okay. So I want to thank you for your valuable time for your online classes. So I hope and I request you to please see these videos on a daily basis. Each and every day we are uploading the videos in each and every day.
I want to suggest you to please watch these videos. Okay. So thank you for your online classes.